you have to describe Sunny in 3 words. जानते हैं there'll be a lot of eyes on her. ये सब देख रहे होंगे कैसी एक्टिंग करेंगी. So she was very eager and very motivated as an actor and as a person. She's a very simple girl. मतलब you know, given the background, blah blah blah. जब आप मिलते हैं, she's very simple, sweet girl. अगर मैं कोई character play कर रहा हूँ, अगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे excite करती है, then it's no point playing. ना, then it'll be boring for me. Dark side भी है, and वो बहुत कुछ मतलब गलत चीजें करवाता है in terms of he's obviously negative in a way. उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो इतना मतलब वायलेंट इंसान है in terms of he's involved with a lot of violence, but he keeps saying I hate violence. आज देखो उसके चक्कर में मुझे उस आदमी को हटवाना पड़ा. अब अच्छी बात थोड़ी है. It is not more of कि it should be like me or not like me, because हर एक इंसान में different personalities होती है. I mean, मैंने पहले भी I've done shows like Red Cartel, I've done Punch Beat, in which he's very very evil person. But if I do it from the core of my heart and it's honest, people will like it. They will love to hate you, but that's the job. It's like when you're in that character, then everything is fine. I can laugh, I can scream, I can shout, I can cry. And the same scene, I can do the scene with laughter or crying with tears, whatever. Hi, hello, सत श्री अकाल. You all are watching पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ इंडस्ट्री से एक ऐसे एक्टर हैं, उस वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर. ही इज वेरी टैलेंटेड एंड वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स इन बॉलीवुड. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर समीर सोनी, जिन्हें हम एक अलग अवतार में देखने वाले हैं. ऑफ कोर्स अनामिका में आपने ट्रेलर देखा होगा. तो पहले तो मैं ट्रेलर की बात कर लेती हूँ. इट्स वन सच पावर पैक्ड ट्रेलर सर. बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा और एक्शन स्पाई थ्रिलर, मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक अच्छे स्पाई थ्रिलर में होने चाहिए इसमें दिखे. सो वेलकम टू पंजाब केसरी. आप कैसे हैं और मुझे बताएं कि हाउ डिड यू गेट अप्रोच फॉर दिस कैरेक्टर? How did I get approached for the character? Quite simple. I got a call from Vikram Bhatt's office. Vikram is the director. और उन्होंने नरेशन दी and that was it. Quite simple. ज़्यादा complicated नहीं था. उन्होंने एक नरेशन दिया कैरेक्टर का and I always wanted to work with Vikram. I've known him for a long time. मुझे कभी मौका नहीं मिला साथ काम करने का. So मौका मिला and the character was जो उनके दिमाग में था, एक slight twist था कैरेक्टर में, which I enjoyed. I thought it would be interesting, challenging होगा करने के लिए. That was it. Sunny, if I'm not wrong, you're working for the first time? With Vikram? Sunny के साथ हाँ पहला शो. If you have to describe Sunny in 3 words as an actor, what it would be then? As an actor or as a person? The two different. As पहले और फिर as a person. As an actor, she's very eager to learn and very dedicated. जो मैंने देखा set पे भी, she's मतलब trying to better herself. अगर कोई scene कर रहे हैं तो if she's not satisfied, she'll have another one कि ऐसे कर ले वैसे कर ले. So very eager to perform really well, because I think वो जानती हैं there'll be a lot of eyes on her कि सब देख रहे होंगे कैसी एक्टिंग करेंगी. So she was very eager and very motivated, I think, as an actor and as a person. She's a very simple girl यार. मतलब given the background, blah blah blah. जब आप मिलते हैं, she's a very simple, sweet girl, and yeah, it was nice talking because she's got I think 2 kids, so 3 kids. 3 kids. Three kids, and I have 1 daughter, so we're exchanging notes. How old is your daughter? How old is your son, or whatever. So it was kind of fun. Okay, वैसे अगर मैं बात करूँ कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, है ना, इतने सारे किरदार आप कर चुके हो समीर सर, तो जब आप अब कोई किरदार चूज करते हो, what is that one thing that you look for in your character? अब it comes down to character के अलावा it's more the people you're working with. Look forward to आप किसके साथ collaborate करेंगे, because films or web series, it's a collaborative effort and it is actually essentially a director's medium. So you see the character, you hear the character, then you see कि director का क्या vision है. Is it something interesting he wants to do? And so that is one thing. And secondly, for me, it's like अगर मैं कोई character play कर रहा हूँ, अगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे excite करती है, then it's no point playing. ना, then it'll be boring for me, right? अगर मेरे लिए boring है तो audience के लिए भी boring रहेगा. So in that character, I always look for one thing कि क्या एक ऐसा चीज है, एक सुर है, एक thought है जो play करने में मजा आए. So to me, I act because I love acting. It's simple. It's not about being the best or not being the best. I love what I do.
एंड अगर आपके कैरेक्टर को वो कुछ, बिकॉज यू गेट टू लिव दोज मोमेंट्स एज अ कैरेक्टर, राइट? जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग अ रोमांटिक और एंग्री गाय और समथिंग, तो you have an opportunity to live those moments. So you ask yourself, would you want to live those moments for some time? And will it be fun for you? So yeah, तो अगर जितना ही कैरेक्टर मुझसे हटके होता है मजा आता है, because being yourself is, आप 24 घंटे सेम होते हैं, but to play a character which is very different and hopefully played in a different manner, and the team around you is nice, then that's, सोने पे सुहागा. बहुत अच्छी बात आपने कही. आपके इसी जवाब में ना मुझे इतने सारे सवाल आपसे पूछने हैं. पहला तो ये आप मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना कि उस कैरेक्टर में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए जो आपको प्ले करने में मजा आए. सो इस कैरेक्टर में आप एक बिजनेसमैन प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा एक्साइटमेंट था या क्या ऐसा एक्साइटिंग था? बिकॉज मैंने इसलिए, क्योंकि आपने पहले भी ऐसे किरदार मतलब किए हुए. करेक्ट. इस कैरेक्टर में जो इंटरेस्टिंग था वो आई थिंक विक्रम की एक टेक था एक कैरेक्टर में. अदरवाइज इट्स अ इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग ज्वेलर है, और उसका एक बैकग्राउंड है, डार्क साइड भी है, एंड वो बहुत कुछ मतलब गलत चीजें करवाता है in terms of he's obviously negative in a way. मगर उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो इतना मतलब violent इंसान है in terms of he's involved with a lot of violence, but he keeps saying I hate violence, I hate lies, I hate violence. Oh, अच्छा. तो वो इंसान वो अपने आप को एक कॉर्पोरेट आदमी देखता है कि यार मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, अगर उसको मरवाना है तो मरवाना है, मैं क्या करूँ? हाँ. I hate violence. मेरे सामने मत करो, शोर मत बचाओ, करो जो कर. So it's very interesting कि जो the person who can be so bad and be so matter of fact, यार उसको तो मतलब he knew too much, उसको तो हटाना था रास्ते से, अब मैं क्या करूँ? और उनके सामने कोई भी चिल्लाता है कि no, I don't like violence, आराम से. So it's a very opposite. He's a very charming guy. जो I mean, there's one scene with the politician. He's saying कि देखो मुझे जो अनामिका है, we have to reach to her fast. आज देखो उसके चक्कर में मुझे उस आदमी को हटवाना पड़ा, अब अच्छी बात थोड़ी ना. So he's saying it so matter of factly कि you don't expect, otherwise you expect evil सा होगा, ऐसा होगा, but he's like no, होगा सब कुछ. So that was very funny and interesting to play something like that. वही मैंने कहा सुन के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो of course. हाँ, because this was Vikram's input. Because जब हम नरेशन कर रहे थे, so I asked him कि विक्रम क्या करें इसके साथ, क्या करें हम डायरेक्टर के साथ? इसलिए ऐसा करते हैं इसको कि he's the kind of guy who hates violence. करवाता भी है मगर he hates it because he sees himself a very corporate man. But his actions are totally the opposite. He's like a drug mafia in charge. So that was beautiful. I thought it was lovely. Brilliant thought from Vikram. So that's why you work with such people who have this, interesting ideas. मैं ये भी जानना चाहती हूँ, like what's more challenging for you on screen, playing yourself or a character which is close to your personality, or playing something which is totally different, like this character? See, look, what happens is whenever you play a character, at least for me, I can't generalize, you always look for something in the character that resonates with you. Some thought, some emotion, something. So that is how you bring the character real. There is a part of Samir in that. Or I see a part of me in that, not completely me. Okay. And when you see that, then you give that character like soul, life. Otherwise, it becomes very artificial. अगर मैं ऐसे ही character play कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही मतलब I can't relate to anything he does, then it becomes difficult. sort of cartoonish हो सकता है, caricaturish हो सकता है, loud हो सकता है. But if I can see something in him which is like, I have felt like this, even though it might be wrong, then you bring that life to the character. So it is not more of कि it should be like me or not like me, because हर एक इंसान में different personalities होती हैं. Absolutely. It is a matter of tapping that part of you, that aspect of you. गुस्सा आपको आता है, कभी आप complain करते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, and you take one of that sub personalities that you have and you magnify that onto that character, and immediately it becomes real because it's coming from a very real place. So that is the beauty of acting. I think anyone who tries to do anything different, it can go fake, can go wrong. I think that's my process. That's सबका अलग अलग होता है. But my process is to identify something in that person
So जैसे आपने कहा ना कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ये भी एक रोल में इतना इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हेनेवर यू सिलेक्ट योर रोल्स एज एन एक्टर, आपका हर किरदार पब्लिक स्पेस में तो जा ही रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, तो हर बार ये सोचना कि लाइक ऑडियंस को कितना समझ में आएगा, isn't it challenging for you कोई भी रोल सिलेक्ट करने से पहले? No, not at all. I think anything that is honest will work. If it is done with honesty and truthfulness, people might hate you, but they will love the character. Definitely. So even if you're being evil and you believe in that, I mean, I've done shows like I did Cartel, I've done and Punch Beat, in which he's very, very evil person. But if I do it from the core of my heart and it's honest, people will like it. They will love to hate you, but that's the job. So I don't think it's not a matter of being good or bad. It is conviction. हम आपस में कई बार दोस्त लोग डिस्कस करते हैं कि what is good acting. But that is, how do you compare one actor with another actor? How do you compare good performance from a bad performance? And to me, it's always it should capture the honesty of the scene. कि जो आप सीन कर रहे हैं, कभी भी ऑडियंस को ये नहीं लगे यार क्या ऐसा नहीं हो सकता. They should be convinced about it. There has to be that conviction that comes in. Number one, and number two, you have to try to make it a little more interesting. अगर interesting नहीं होगा, they probably don't want to watch you. Obviously. So it's that balance you make, and that's the fun of acting. That is the fun you play with. कि इतना push कर सकते हैं, इतना back off कर सकते हैं. Can I convincingly do it? When you have a camera close to my eyes, is my eyes telling what I want to say or not? कि लग रहा है कि acting. I'm not here to prove I'm a good actor. I'm trying to capture the truth of that moment, and hopefully do it in an interesting manner so that people are entertained. So that's pretty much. I want to ask you, do you take references when you play your characters? Different kind of characters? So I give preferences. References. Sometimes it comes automatically. Sometimes it comes to you because that is what you do, and that is what I do. Is I don't consciously make that, but part of an actor is to observe as much as they can the small nuances that people do. And when something happens, when you're watching other actors do something, or you see a person doing something and you said, that's a very interesting way of doing it. So you kind of soak it in. And when that moment comes and you're in the right frame of mind and the director says action, I never premeditate what I do. So my every take will be different. My job is I get myself into that moment before action that I'm in the frame of mind of the character. उसके बाद कुछ भी हो जाए, I don't know. My instincts will take over. Because I remember there's one scene we were doing and there's some confrontation वगैरह, and I was just, something was itching me. There was like, I was in the character and he was getting a little impatient and stuff like that. So it wasn't decided, and suddenly when the scene ended, I say something and I took a glass and I smashed it in front of the camera. And someone like, sir, पहले बता देना चाहिए, अभी तो कुछ टूट जाएगा. So I said, यार मुझे खुद नहीं पता था मैं ये करने वाला हूँ. So I like to go on instincts. I'm not mechanical in that sense कि ऐसा करना है, वैसा करना है. As long as my emotion is raw and true, I let myself free. Then I'm not like a child playing. I can do anything I want. It's like when you're in that character, then everything is fine. I can laugh, I can scream, I can shout, I can cry. And the same scene, I can do the scene with laughter or crying, with tears, whatever. I give myself that freedom. And luckily, when you have a director who understands that, he gives you your liberty. Samir, go for it. So हमेशा बोलते हैं, go for it, do what you want to do. So that's what I love doing. It's not कि यार ऐसे करूँगा, इस line पे ऐसे करूँगा, उसका ऐसा है. आ जाता है, मतलब like spontaneously when you read the script or you are into the character or you're doing a scene, you're performing. Yeah, अभी इतना साल का experience है. See, the thing is that to me, acting is like running a 100 meters dash. वो 100 meters तो 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा. मगर उसके पीछे जो practice, years of practice होती है. So when you say on your marks, get set, go. At that point, your brain has to be blank, and you just have to run. Likewise, before the director says action, I have to be in the moment of the scene, of the character, feeling that. And when he says action, I let myself go. And then that's when magic happens.
Magic always happens is when you surprise yourself. I like to surprise myself. अरे यार, सोचा ही नहीं था ये कैसे कर दिया. And if they ask me to do it again, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या मैंने यार. Let's do something else. So that's the fun. That's the fun of acting, that when you surprise yourself. Yeah, अच्छा ऐसा भी हो सकता है. I mean, there was one scene in which I'm supposed to, this is from another show actually, but reminded me, in which I'm supposed to cry. अब रोना नहीं आ रहा था, quite honestly. So रोना नहीं आ रहा था, but I still did it. So the director said, नहीं sir, वो नहीं आ रहा, कुछ करना पड़ेगा. Okay, let's try it. So I started the scene by laughing. Okay. So I started the scene with laughing and saying, I will not force myself to cry. But when I was laughing and started saying my dialogues, gradually, I got sucked in. And my laughter turned into tears. So that's the beauty of acting. That's when you are able to do that, then you go home very satisfied. कि अरे हाँ यार, आज कुछ अच्छा किया. So yeah, that's it. ये ऐसे भी मुझे लगता है एक फिनोमेना ऐसा होता है ना, when we laugh out loud, so ultimately tears comes out from our eyes. See, the biggest thing you should never, I personally, again, you should never force anything. जबरदस्ती का अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स मत करो, पता चल जाएगा. मगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो आप स्माइल से स्टार्ट कर लो. And जैसे gradually you'll get into the scene, अगर the dialogue are written some way and you're believing, it'll come. You have to trust yourself. Which, a lot of people when you start out, they're not able to. तो पहले सोच के आते हैं कि ऐसे करेंगे. और अगर थोड़ा भी चेंज हो गया या सामने वाले का रिएक्शन बदल गया तो that person will be like, ये क्या हो? So, yeah. ऐसा सर होता है ना कि हम लोग हमें कंपेयर करते हैं किसी और एक्टर के साथ या किसी एक किरदार को पर्टिकुलरली कि ये एक्टर ने भी ऐसा प्ले किया था. कभी ऐसा कोई मोमेंट होता है जब आप खुद को कभी कंपेयर कर दिया हो किसी किरदार को देख के? नहीं? Like I said, my job is to be in the moment, be in the emotion, and then see what happens. So then I am surprised and the director is surprised and hopefully the audience is surprised. Because there's so many things you can do. There's so much, So it's, I don't, yeah. Itna nahi, I don't think like that. The moment I don't even watch myself, ek baar scene kar liya, I don't like to watch it. So I'm always, if the director is happy, I'm happy. I don't like to. Because फिर क्या होता है ना, आप अपने आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, एंड तभी यही होता है कि आप फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं, राइट? तो to me my boss is my director. If he's happy, I'm happy. मैं कभी जाके मॉनिटर में चेक नहीं करूंगा कि क्या किया मैंने. I'll ask my director, are you okay? If he says okay, चलो next, let's go. Very nice. अच्छा, एज एन एक्टर आप इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क रहता है, आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, पीपल स्टार्ट्स बिलीविंग ऑन यू. अगर ये एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ आप इतनी सारी और चीजें मैनेज करते हैं. अभी आपने एक बुक भी लिखा, यू आर अ राइटर टू. सो आज के वक्त में अगर मैं बात करती हूँ सर, मेंटल हेल्थ पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, बिकॉज द पीपल हु आर इनटू शोबिज बिजनेस ना, तो उनके लिए तो ये मेंटल हेल्थ और एक बड़ा इशू है. तो आप किस चीज से इंस्पायर होके आपने ये किताब लिखा और मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ कोई किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक लिमिटेड सीमित नहीं है. मेंटल हेल्थ इज बिकॉज प्रेशर बढ़ रहे हैं इस वर्ल्ड में, इतनी ऑप्शंस हैं, ये बनना है, ये करना है, ये अचीव करना है. आपको सोशल मीडिया बता रहा है कि आपको ऐसा दिखना चाहिए तो ऐसा दिखना चाहिए, बेशक 50 फिल्टर लगे हों, तो बहुत प्रेशर है. फॉर any normal human being to keep up with that is a lot. So it is important, mental health. Or that is one thing. And secondly, हमारी industry, because it's a creative industry, and उसमें आप you are judged all the time. Okay, अगर सड़क में बाहर भी जाऊंगा तो I'm sure अगर लोग मेरी तरफ देखेंगे तो 10 में 5 ये भी बोलेंगे, यार ये थोड़ा मोटा नहीं हो गया, नहीं थोड़ा पतला नहीं हो गया, थोड़ा यार स्क्रीन पे लंबा लगता है. that is will happen. You will be judged no matter who you are and what you are. And during pandemic जो हो रहा था वो देख के that kind of really inspired me. I also lost a very dear friend, and that made me kind of think you have to say something about mental health and mental fitness and हमारी society कहाँ जा रही है. हमारी society में the most important thing is success.
and success is defined with money, fame, cars, houses. And I've seen a lot of people in my life who have had all these things and were miserable. तो हमें कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको बताना पड़ेगा, बिफोर सक्सेस कम्स हैप्पीनेस, यू हैव टू लर्न टू बी हैप्पी. अगर आपने वो नहीं सीखा है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना नाम कमा लें, इफ यू आर नॉट हैप्पी तो उसका क्या फायदा? I mean, if a billion people know who you are, और आप रात को अच्छी तरह सो नहीं सकते हैं, what's the point? So that was the reason why I wrote that book. I want to shift the narrative from the success and larger than life. ये वो उतना दूर के ढोल सुहाने करेंगे यार, ठीक है, but everybody goes through their own struggles and we have to talk about it. Like my daughter is 9 years old. The only thing every day when I talk to her, हम dinner table पे discussions करते हैं, I ask her, beta, what is the most important thing in life? Yeah, Papa, be happy. So, yes. You don't have to come first in class. That's okay. 10th भी आ जाओगी तो life खराब नहीं हो जाएगी आपकी. सही बात. So as long as आप खुश हैं, that's good. And I think everyone should understand that. और आज के अगर इंटरव्यू को देखकर लोग इस बात से इंस्पायर हो जाते हैं तो मुझे लगेगा कि yes, हमारी गलती नहीं है. वो एक्चुअली हमारे जो अर्लियर जनरेशन थी, जो पेरेंट्स थे, उनको शायद जो वो चाहते थे, करना चाहते थे लाइफ में, अचीव करना चाहते थे, कर नहीं पाए. तो उन्होंने हमें बच्चों को यही तालीम दी कि बेटा फर्स्ट आना क्लास में, ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, अच्छी नौकरी मिले. ठीक है. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपना तजुर्बा हमसे शेयर किया. और तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है. हर एक बच्चे को बोलता हाँ भाई अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो मम्मी डैडी प्यार करेंगे. ठीक है. स्कूल में लड़के मेरे को बोलेंगे अरे वाह, रेस में भाग के फर्स्ट आया, सब तालियां बजाएंगे, अच्छा लगेगा मेरे को. हाँ, so they're doing this all for the wrong reason. They're doing that so that कि लोगों की तारीफ मिले, लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें. और उससे कहीं बड़ी बात है कि आप लास्ट आके भी अपने आप को एक्सेप्ट करें, भाई मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है. So this is what we have to, I personally feel very strongly about. We have to, teach the new generation. It's not about, हो भी गया. I think new generation हो रही है. It's not about. मेरा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन या पॉप सिंगर हमारी लाइफ टाइम में कौन रहा है? अगर हम इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें, ग्रेटेस्ट पॉप सिंगर जो अब नहीं है हमारे साथ, माइकल जैक्सन. उनसे बड़ा नाम तो किसी का नहीं था. एल्विस प्रेस्ली पहले जमाने में, हम जब उनका नाम बोलते रहे, वाह माइकल जैक्सन. मगर हम में से एक आदमी भी क्या उनकी जिंदगी जीना चाहेगा? तो फिर वो ग्रेटनेस का क्या फायदा हुआ? फिर जो आप दूसरा कोई जीना नहीं चाहता आपकी जिंदगी, मगर आप फिर भी बोलते हैं हाँ माइकल जैक्सन, क्या फायदा उस बेचारे का? तो ऐसे ही मर गया. कहाँ लेके जाएगा अपना नाम, वहां सब यही रह गया ना. फिर व्हाट्स द पॉइंट? हाँ, एक ना एक दिन तो सबको मिट्टी में मिलना ही है ना. एटलीस्ट खुशी मिलो ना, तो अच्छी बात है. रो पिट के ही मिलोगे तो फायदा क्या हुआ? खुशी is the most important. Yes, I personally feel that, peace, happiness, satisfaction is most important. So after so many roles and characters in films, in web series, in television, is there anything which is left and yet to be explored by the industry according to you? There's always more. You can always do more. There's never enough. It's never enough. You can always more. I mean, अभी जैसे मेरे दिमाग में बात आ रहा है, अनुपम खेर ने उनकी पहली फिल्म थी, हाँ, सारांश, correct. I've never played something like that. I would love to play that. Wow, that's nice. Yeah, because he was, I think, barely 30 years old जब उन्होंने ये रोल प्ले किया था. अब क्या कॉन्सेप्ट है कि एक फादर अपनी बेटे की अस्थियों के लिए ब्राइब देने की कोशिश करना पड़ रहा है. तो गॉड विलिंग एक दिन वो मिलेगा. अभी तक थोड़ा जवान लग रहा हूँ मैं तो वो दिन दूर नहीं है. सही बोला आपने, एब्सोल्युटली. जरूर हो जाएंगे आप, मुझे लगता है. नहीं, आई डोंट केयर. मैं सर्दी मुंड मालूम है, मुझे कोई ऐसी कोई नहीं है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं. एब्सोल्युटली. Thank you so much, Samir sir, for talking to us. Please, आप देखिए MX Player पे, प्लीज सबको बताइए. It's a very interesting show, very exciting. End second तक आप will be glued to your seat कि अभी क्या. And I think जब season end भी हो जाएगा तब भी आप लोग
आने वाला है दूसरा सीजन. So it'll be very nice. Sunny's done a fantastic job. There's some fine actors जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं. Rahul Dev is there, Ayaz Khan is there, and बहुत मेरे close friends हैं. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. And Sunny will surprise a lot of people. I think ये show आपको जरूर देखना चाहिए. Definitely, I am looking forward. और कल का दिन बिल्कुल इसी के नाम है. Thank you. So I'm going to binge watch, and I hope viewers will also binge watch this series. जिस तरह से हमने इतनी तारीफें अभी सुन ली और सर का किरदार के बारे में बात कर ली है. So I would See, let me know what you think of it. Definitely yes, sir. Okay. Thank you. Bye bye. Take care.